अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे मुतासर होती है जब पैथोजन अटैक करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि जो पैथोजेंस हैं वो रेस्पिरेशन के अमल को कैसे मुतासर करते हैं पौधों के अंदर। तो रेस्पिरेशन के बारे में हमें पहले जानना ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन जो है क्या होती है पौधों के अंदर। तो ये उल्टा फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस में जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी ये आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो थैलेकॉइड्स के अंदर ये अमल जो है वो को पजीर होता है फोटोसिंथेसिस का। तो वहाँ पे फिर जो आउटकम होती है फोटोसिंथेसिस की दैट इज द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे ये उल्ट है, जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं एंड दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है वो एक सांस लेने का अमल ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट और ऑक्सीजन इन, बल्कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है in the form of ATPs. The respiration is the process by which the cells, through enzymatic oxidation of glucose and fatty acids, produce energy for various activities and carbon skeletons. Energy is present in the form of 20 to 36 reusable bonds of ATP. So where it happens, of course, it happens in the energy house of the cell that is called mitochondria in the presence of oxygen. If it is in the presence of oxygen, that is called aerobic respiration. And in case of absence of oxygen, that is called anaerobic respiration. So यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स जो है वो क्या है। सबसे पहला स्टेप जो है वो that is the hydrolysis of glucose into pyruvate, या degradation of glucose into pyruvate. This process is called glycolysis. तो ये एक anaerobic process है, यहाँ पे दो ATP मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं। तो जब पायरुवेट बन जाता है तो यहाँ पे या वो जो है चेंज होता है in the form of electron transport chain, that is also called Krebs cycle, या उसकी fermentation होती है in the absence of oxygen, जहाँ पे lactic acid और ethanol जो वो प्रोड्यूस होते हैं। तो Krebs cycle या electron transport chain जो है वो anaerobic process है और fermentation जो है वो that is anaerobic. Krebs cycle aerobic है और fermentation जो है that is anaerobic process. So next is the second step, regardless of the pathway, involves the degradation of pyruvate in which carbon dioxide and water are produced. This is accomplished by the series of reactions called Krebs cycle, which is accompanied by so-called terminal oxidation and is carried out in the mitochondria only in the presence of oxygen. So rate of respiration depends on the molecules of ADP. तो ADP जो है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो इसका तयन करती है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कितना होना चाहिए। जिस तरह क्योंकि ATP जो है इससे ADP और फास्फेट और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन का वो ये ADP का मॉलिक्यूल है। तो ADP के मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा अकोमोलेट हो जाते हैं सेल के अंदर, तो सेल जो है वो सिग्नलिंग करता है कि अब जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि सारी ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो एनहांस होना चाहिए। तो यहाँ पे लेस ATP is used, little or no regeneration of ADP means less respiration. Therefore, amount of ADP determine the rate of respiration. तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो जब पैथोजन अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर, दैट लीड्स टू द इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट and slight rise in the temperature of the plant, because affected tissues use up their reserve carbohydrates faster than the healthy ones. तो इसमें क्योंकि फाइट करने के लिए, पैथोजन से फाइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो एनहांस हो जाता है. Increase in the respiration starts soon after the inoculation or invasion of the plant pathogens and rises to a maximum rate with the sporulation of fungal pathogen, and then that reaches a plateau and declines to the normal or subnormal level. However, in the resistant plants, the rate of respiration increases very rapidly but declines soon, while the susceptible plants respiration rises slowly but lasts for longer time. तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो वो शूट करता है या बहुत क्विकली जो एनहांस करता है रेजिस्टेंट वैरायटीज के अंदर, और इसी तरह फिर डिक्लाइन भी कर जाता है. लेकिन जो ससेप्टेबल प्लांट्स हैं उसमें ये बहुत स्लोली जो है राइज करता है और ज़्यादा देर तक जो है वो रहता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ज़्यादा रहता है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नीडेड फॉर रैपिड प्रोडक्शन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द सेल. लेकिन इन ससेप्टेबल वैरायटीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत स्लोली जो इंक्रीज होता है, तो susceptible plants respiration increase slowly after inoculation but continues to rise at high level for much longer time. तो ये क्यों होता है? Because there is no defense response in the susceptible varieties. So changes in respiration in plant due to pathogen, तो वो क्यों होती हैं? Because of increase in the plant metabolism and protoplasmic streaming. Increased respiration has been noticed in cereal rusts, powdery mildews, blast, rice blast, lead blight operator, and many other diseases. Levels of many enzymes are associated with respiratory process is increased in the diseased plants. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बैक्टीरियम ट्यूमफेसियम की, जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है. The accumulation of phenolic compounds associated with defense pathways increases mainly due to pentose pathway. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पेंटोस पाथवे के जरिए जो है वो जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और डिफेंस जो है एनहांस हो जाता है. And increased respiration cause uncoupling of oxidative phosphorylation. Phosphorylation क्या होता है? That is addition of the phosphate group. So oxidative phosphorylation जो है ये क्या होती है? That is the formation of ATP from the ADP. तो ADP में जो है वो 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं. तो फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होता है तो उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, और इसमें काइनेज एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन जब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो टूटता है या हाइड्रोलाइज होता है या आप कह लें कि डिटैच होता है फ्रॉम ATP और एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको फॉस्फेटेज एंजाइम कहते हैं. Increases respiration rate is due to high metabolic rate of the infected tissues, because high metabolic rate requires more ADPs, and high ADP is produced that stimulate the rate of respiration. Glycolysis is the most common pathway for respiration. Pentose pathway is alternative and less common pathway that tends to replace glycolysis pathway. That caused increase in the production of hormone, toxins, bound, starvation, and so on. However, the pentose pathway is the main source of phenolic compounds which play an important role in the defense mechanism of the plants against infection.
So I hope you like this video. Thank you very much. Assalamu alaikum.